देखिए हम जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं या किसी एग्जामिनेशन हॉल में किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ सेंटेंसेस का लिखना ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ नहीं बल्कि सेंटेंसेस के थ्रू हम अपनी मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं टू द ऑडियंसेस। ये जो सेंटेंसेस है ये कभी कभार लॉन्ग होते हैं, कभी कभार कंपाउंड होते हैं, कभी कभार शॉर्ट होते हैं और कभी कभार कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द पार्ट ऑफ सेंटेंस। और उन सेंटेंसेस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लॉजेस आते हैं। We are having different kind of clauses in those sentences. Basically, the other name of sentence is called clause. Or there is no difference, I think there is no difference between clause and sentence because सेंटेंस हमेशा मुकम्मल मीनिंग देता है, लेकिन कभी कभार वो सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। जब मुकम्मल मीनिंग नहीं देता उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, पार्ट, दैट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस। और जो एक सेंटेंस जो मुकम्मल मीनिंग ना दे कभी कभार उस सेंटेंस को हम लोग क्लॉज का नाम देते हैं। सो क्लॉजेस आर समटाइम्स गिविंग कंप्लीट मीनिंग, समटाइम्स इनकम्प्लीट मीनिंग। जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं उसको मेन क्लॉजेस कहते हैं, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। और जो मुकम्मल मीनिंग नहीं देते दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस। आज हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि आने वाले वीडियोस में हमने क्लॉजेस के हवाले से कौन कौन सी चीजों को कवर करने की कोशिश करनी है। तो अब क्लास है, क्लास को बेसिकली हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जिस तरह की मैंने आपको पहले कहा, क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू independent clause, and the next one is called the dependent clause. इसको मैं इंसर्कल करूंगा, ये independent clause. So the independent clause is a clause which gives complete meaning. इसको क्लास हम लोग क्यों कहते हैं? बेसिकली क्लास की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इस क्लास में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। We will talk about that once again, although we have brought this into our discussion in the previous videos. In coming videos में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लासेस में कौन कौन से क्लासेस होते हैं? एक होता है फॉर एग्जाम्पल the declarative clause, for example, or the declarative sentence, as I told before as well, that there is no difference between clauses can be divided into these following clauses, which I'm going to jot down on my whiteboard. So the declarative sentence or the declarative clause, as I told you before as well, there is no difference between sentence and clause. We will call this is declarative clause. The next one is called the optative clause or the optative sentence. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आने वाले वीडियोस में कि optative clause क्या है, क्या काम करता है, what is declarative sentence or what is declarative clause, which are the part of course the independent clauses. The next one is called the imperative clause. This we will also talk about the imperative clause, the optative and declarative. The next one is called the interrogative clause. We will also talk about the interrogative clause in the coming videos. These are the main kinds of independent clauses which we will try to talk about in the coming videos. जहाँ तक dependent clause की बात है तो dependent clauses को भी हम मुख्तलिफ किस्म के clauses में divide करते हैं। ये शुरू होता है noun clauses से, which is called noun clause. So we will also talk about the noun clause, the date clause, for example, that clause, and the third one is called the ing clause, for example. The fourth one is called the adjective clause. The fifth one is called the adverb clause. Adverb clause, adjective clause or noun clause. इसमें भी अपने kinds हैं. For example, the noun clause. Why do we call noun clauses a noun clause?
although there is nothing called noun in the sentence, for example. How does that clause work? और ing clause क्या है? इसको हम लोग ing clause क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते आ रहे हैं कि clause के लिए ये होना लाजमी है कि subject को predicate हो, लेकिन ing clause में हमारे पास subject नहीं होता। फिर क्यों हम ing clause को ing clause का नाम देते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। Why do we call the ing clause is ing clause? इसको हम लोग participle clause भी कहते हैं, the participle clause, और the adverb clause को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि what exactly adverb clause is, इसमें सब categories क्या है, what are the subcategories of the adverb clause. For example, adverb clause of time, adverb clause of condition, adverb clause of contrast, adverb clause of place, adverb clause of for example the opposition, for example, adverb clause of position. So we are having different kinds of the adverb clauses as well. Now the sixth one is called the verbless clause. Verbless clause का नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा. We'll also talk about the verbless clause. Seventh is called the conditional clauses. इसमें different types है. Conditional clauses के different types है. The type 1, the type 2, type 3, and the zero conditional clause, for example. The eighth one is called the to infinitive clauses. ये भी हमारे पास clauses मौजूद है. The to infinitive clause. The ninth one is called the reduced clause, for example. Reduced clause. ये फिर क्या है? The contact clauses. These all are called the parts of dependent clauses. So in order to get information about these clauses, it's very much necessary, much important to know about these clauses in order to bring variety in your communication, either in written or in speaking form. तो ये बहुत ही जरूरी है. ये अगर मैं आपको ये बता दूं, ये दो गुलदस्ते आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोग अपनी राइटिंग को खूबसूरत बना सकते हैं. तो it's very much important to know about these clauses. Noun clauses is the part of dependent clauses which depend upon the independent clauses, for example, and the independent clause in themselves. What are they? So it's very much important to know about them. The declarative, the optative, the imperative, the negative imperative, or the passive imperative, for example, and the interrogative clause. On the other hand, we are having noun clause, which can be divided into four parts, for example, the that clause, the ing clause, the adjective clause, which can be divided into two to three categories, for example, the adverb clause, which can be divided into 9 categories, the verbless clause, which can be divided into 1 category, the conditional clause, which can be divided into 3 categories, the to infinitive clause, which can be divided into 5 categories, the reduced clause, which can be classified as only 1 clause. So we will talk about these clauses in the coming videos. Try to tune to our YouTube channel and enjoy these types of sentences.